minutes, and then we can actually have 10 minutes of discussion. Yeah. We can see your slides. Okay, you can see my slides. Okay, so now, मेरा काम वैसे वरियाम ने आसान कर दिया है. So I have very little time and I will quickly go through on my, so you can see my slides now? Yeah, we can see it. Okay. Yes. So varicose veins, I've been teaching this to the medical students, residents, and now to the, the fellow for their FCPS exam. So I was just wondering how to take this. But I thought, you gave me the case of this 35-year-old male, and I know that a lot of my fellows at trauma center see this patient on daily basis. It's very common. So if a patient comes to the clinic with dilated veins of the lower limb and ulcer, how would you proceed? Obviously, we as a medical doctor proceed with the clinical history examination, and this comes to your exams and all the time on your consultations with the different history and clinical examination. And usually, you have to examine based on the what they say, whoever consults you, कि lower limb में there is some dilated veins, or there are some skin changes, or there are some wounds. So first thing first, you need to know the superficial vein anatomy. Of course, everyone knows the great saphenous vein. This starts at the groin level, and it although it starts from the the anatomically, we all know that from the dorsum of the vein on the medial side goes behind the medial malleolus, in the calf, behind the knee, and up join at the groin crease level somewhere into the common femoral vein at the saphenofemoral junction. And then on the lateral side, small saphenous vein behind the knee somewhere in this region, join the popliteal vein, saphenofemoral. So mostly we all know that the varicosities, which is a dilated tortuous varicose vein, more than 3 mm, it is the most common. If somebody says what is varicose vein, it's dilated tortuous vein. So we should be able to give the answers of the basics, and we should be able to give the answers while we call and certify as a vascular surgeon the complex, as the Varyam has told you, the complex scenarios of the PTS as well. Anyway, so these patients, what is this? A? Anyone? Telangiectasia, spider veins. So how do you say it's a telangiectasia size-wise? Up to 1 mm. Yes, up to 1 mm is a telangiectasia, 1 to 3 mm reticular vein. These are varicosities. On the medial side, these are varicosities, dilated tortuous vein, posterior calf. This is edema on the left side. These are pigmentation on the medial lower calf. These are white discoloration. So this is called atrophy blanche. This is pre-ulcerative changes. If you see in any patients, these are the you warn this patient that it may end up in ulcer formation in this area. This patient is active ulcer, and we know in the SEEP classification this is C6. So SEEP के इन्होंने बात की थी. तो सीप जो है इस तरह से कि C0, no visible changes, quickly to varicose veins. Based on C classification, conservative therapy भी आप दे सकते हैं. C3 is only edema, C4 में A is pigmentation, C5 is healed ulcer, C6. So severity जब बार बार बरियाम कह रहे थे तो severity is C. But also, you need to know the primary, जो pathophysiology is primary and secondary. You must always, in history and clinical examination, try to find the etiology and pathophysiology to before, thinking of offering the treatment and giving the answer to this patient why this happened, because they will ask you why this happened. Anyway, so after this case is presented to you, you have to take the history. Most common the symptoms they present: heaviness, tiredness, feeling of these symptoms. All these symptoms, they are exacerbated of prolonged standing and sitting, you all know. So you differentiate on the history, sit with patients, ask them,
And if it does not fit into the venous symptoms, then you can reassure them that they may have the varicose vein, dilated veins, but they may not be symptomatic, and you can reassure, and they may not need the intervention right away, and there may be associated neurological or other problems, orthopedic pathology, which is giving them the symptom. These may just be present there and visible to them. They also, I said the primary or secondary, so the history of any sudden severe swelling in the past, what is their occupation, means they've been labor and standing maybe 10 hours, 12 hours per day, or maybe they are surgeon who are standing longer period. The female patients with multiparasity had progressive increase in varicosities every pregnancy and then getting better. Demographic, with increasing age, these symptoms worsen, and then maybe earlier they had just the varicosities, and now they are coming with the ulceration. And ulceration may be initially small one and now increasing. And of course, once you take a good history, then you can differentiate between whether it's a venous pathology or neurogenic pathology or orthopedic or any other, because their patient may just have edema, and this edema could be some systemic disease, not the venous origin. Once you finish your history, of course, you have to rule in or rule out the venous pathology. SEEP, I have already shown you. Once you see dilated tortuous vein, you have to see whether there are associated skin pathology. Always examine in the standing position. Extent of disease, if you find some varicose veins, you have to see that this is along the great saphenous vein, into the foot, into the leg, into the up to the groin, along the great saphenous vein, along the small saphenous vein, and along the accessory veins, which are not the normal, the great or short saphenous vein. And also, do not forget what is not covered in the SEEP. Expose this patient's pelvic and abdomen, because just the Varyam said, there may be some associated deep venous problem where they may have collaterals in the abdominal wall or the pelvic or vulval area. Do the leg examination as a whole, because once you decide that this patient has a venous pathology, you may want to have a compression stocking, do the pulse examination. And what is the ABI where we can give the compression stocking? What is the cutoff when you can give? Anyone? 0.6. 0.6. Okay, so you must do the, once you decide that patient needs a compression stocking, very good, 0.6 and above, you can give the compression. Otherwise, you cannot offer it will worsen patient's condition. And do the patient examination to rule out systemic disease and whether this patient is amenable or a good candidate for any intervention, be it superficial or deep intervention. I've already gone into the C, then etiology, primary, secondary, then anatomical, superficial, deep, perforators, because what you find, you have to individualize the treatment. You just cannot offer a one size fit all treatment. नहीं आपका जो है ना superficial कर दूंगी, नहीं मैं आपका तो deep कर दूंगी. Every patient will present with unique pathology, and you have to deal the pathology in that patient accordingly. So revised venous clinical severity score, Varyam already said multiple times, it's based on the severity. So if the patient this has been designed to, at the start of any patient presenting to you and then follow. So this is a dynamic score. Once you first time take this score, and then you offer some treatment, and then you follow this patient, whether there is a change, so that patient maybe come from with the severe, and then after your intervention, it goes to the mild or not. So it gives you an idea of success or, efficacy of treatment you have offered, where, for example, initially maybe they had this varicosities on the severe level, skin pigmentation, induration, and ulceration, which was
more than 2 active ulceration, and now has none or 1 ulceration. So this is very good, and it has been revised from I've taken this from the guidelines, ESVS. And then, the imaging, once you have a clinical history examination, most important or in the chronic venous insufficiency also, duplex ultrasound. It is done in the standing position. The first and foremost, you start with the deep veins. If deep veins are good, then you look for the superficial veins, and the superficial veins also, Varyam said, for the superficial veins, you look for the time of reflux 0.5 second in the deep veins, it's 1 second, and for the superficial, it's 0.5 second. There's a whole algorithm and protocol of how you do this, and this comes in the exam, I'm told, in talks and sometime in short cases. So better you do the rehearsal, or you should do it actually. I would highly recommend you do it multiple times so it becomes your second nature. Axial imaging is very rarely performed in superficial wound unless there are multiple scenarios which Varyam just presented, and you need a history, or there is some suspicion of deep vein reflux or involvement, or there are some like pelvic or abdominal collaterals and you need it. Venogram is rarely required right now, only for superficial varicosities. So, once you have identified, there are questions. Patient will ask you, what are the acute complications? So I ask you, what are the acute complications of varicose veins? Any fellow who is going for exam? Are It there could be any superficial vein thrombosis, superficial varicose vein thrombosis? and the other one is bleeding. Bleeding fetal हो सकती है? Yes. Yes, ma'am. SVT जो है वो कितनी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कितनी कॉमन होती है? Is it very common? Very common, but it's more common in varicose veins. So बहुत कॉमन नहीं होती है मगर हो सकती है, और अगर किसी को क्रॉस वेरिकोसिटीज हैं सेगमेंट में भी हो सकती है, पूरे लेवल पे नहीं होती है. सो देयर आर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स. ब्लीडिंग जो है वो, if it is a small vein, it can be a small bleeding which can be controlled by compression, but if the patient is frail, cannot take care of himself, and it is a big vein bleeding, then it can be fatal. Why does varicose vein happen? This is about the pathophysiology. What is the pathophysiology of varicose vein? Anyone except Amna? It could be a reflex of the superficial vein or the Primary varicose vein. Why does primary varicose vein happen? मेरे पास कितना टाइम है? मेरे पास कितना टाइम है डॉक्टर जिया? 10:35 पे 10:35 you have about I will Okay, say 30. to Okay, 15 minutes 15 minutes. Okay, into 20 minutes you can do. Yeah. sure. Okay, so primary varicose vein में क्या होता है? What is the pathophysiology? Patient आके आपसे पूछ रहा है. Explain me, I am a patient. Kamran. Madam, valvular insufficiency or incompetence, Okay. agenesis, any anatomical issue, agenesis or absence of walls, something. किस जगह पे होती है डॉक्टर साहब? किस जगह पे होती है? आप क्या करेंगे मेरे वेन के साथ? Anyone else? it सब लोग could चले तो नहीं गए सवाल? veins or in the perforated veins. One person at a time, please. Sorry, सब लोग चले तो नहीं गए मेरे सवाल करने में? At the junction where it drains in the deep vein system. Okay. So where does it drains into the deep vein system? Like Gatz-Cephalus vein drain at the common femoral vein.
Okay, so there is saphenofemoral junction. We have done your ultrasound and there is incompetence. So it is coming back. It is not going into the deep veins and it is coming back. And what it does? reflex in the saphenofemoral. रिफ्लक्स से क्या हो रहा है? एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन हो रहा है एंड सब्सिक्वेंट सारे जो वेन वेल्व्स हैं इनटू द वेन वो भी रिफ्लक्स हो रहे हैं, ठीक है? Yes. और ये उसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं. सो दिस इज इवेंचुअली द एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन है जिसके आपको सिम्टम्स हो रहे हैं. हैवीनेस, इधर सिम्टम्स इनिशियल है, डायलेटेड वेन्स है, एडिमा है, डिपेंडिंग के उसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है? व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट गेट एनी ट्रीटमेंट? क्या होता है? व्हाट इज द नेचुरल हिस्ट्री? The clinical presentation will be worse. According to the C, patient may develop the ulcers, lipodermatous sclerosis, eczema, then ulcers. Okay, so it may go from C1 or 2. 2 तो वेरिकोस वेन्स है ना जिसमें डायलेटेड वेरिकोस वेन्स नजर आ रही है, तो वो 3, 4, 5 तक जा सकता है, ठीक है ना? तो वो प्रोग्रेशन फ्रॉम C टू 3, 5 तक और 6 जो एक्टिव अल्सरेशंस हैं, तो उसका जो ये सारी जो अगर ना करें इसमें ट्रीटमेंट, नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस कौन से हैं? वो कहें मुझे ऑपरेशन नहीं कराना. नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस क्या हैं डॉक्टर साहब, कामरान और मुकीम के अलावा? डॉक्टर शफी है. इफ आई क्लिक माय स्क्रीन इट गोज टू नेक्स्ट स्लाइड. सो हु एल्स इज देयर ऑन द डॉक्टर? Compression therapy. जी मैं हूँ, लेकिन मैं दरमियान में वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, उस वजह से मैं जरा दरमियान सॉरी. में हाँ skip डॉक्टर हो गया. शफी, व्हाट आर द नॉन ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर वेरिकोस वेन्स? Madam, non-treatment options that we have to do a conservative approach. In Right. conservative approach, we have a physical physiotherapy of the patient. Then we have फिजियोथेरेपी कराएं. in physiotherapy we have, madam, the strengthening of the calf muscles and the using of foot insoles to improve the pumping. And then we have got the compression, different types of compression therapy. And so it comes, but the patient have to be counseled that these will help, but they did not prevent the progression and the of the disease. सो कंप्रेशन थेरेपी में कौन सी कंप्रेशन थेरेपी होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशन थेरेपी, राइट? Different types of compression therapies are, madam. One is the elastic compression therapy, and स्टॉक्स, स्टॉकिंग, stocking, madam. And Right. then there is elastic and inelastic compression stocking combinedly, and then there are adjustable compression garments, and the fourth one is the intermittent pneumatic compression. सो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स में अब वेरियस ऑप्शंस हैं. एक जो आप ओपन टो हैं, ठीक है, और जो मुश्किल से चढ़ती है, कुछ लोग नहीं चढ़ा सकते. इलास्टिक कंप्रेशन का मतलब है उसमें कुछ इलास्टिसिटी के लिए नायलॉन डाला जाता है. जिन गर्म एरिया में लोग नहीं पहन सकते हैं उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं. एडिड जो है उनको हेल्प के लिए डिवाइसेस हैं जो उनको वो पहनने में मदद करते हैं, ठीक है. जो वो नहीं कर सकते फिर उनके लिए इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन के डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो उनको हेल्प करते हैं फॉर कंप्लायंस के लिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं पहन सकते. दीज आर लाइक दे कॉज हीट एंड दे कैन नॉट टॉलरेट सम पीपल. सो ESVS के गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके सिर्फ सिम्टम्स हैं तो आप उसको 15 के 20 वाली कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी दे सकते हैं. अगर उसको ज्यादा एडेमा और C3-4 है तो आप उसको डेफिनेटली 20 to 40 पे जाएं, वरना इससे लो ग्रेड की कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी दे सकते हैं. तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप उस वक्त देते हैं जब पेशेंट किसी भी वजह से ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता और अर्ली ग्रेड में है, ठीक है, और ये किसी वजह से इधर अनफिट है या वो नहीं करवाना चाहता. आप उनको वार्न कर देते हैं कि अगर अल्सर है आप अल्सर को ट्रीट कर देते हैं. अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए भी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इनिशियली देते हैं जबकि वो अगर वो नहीं फिट है पेशेंट फॉर एनी रीजन, ठीक है. तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट चलती है इवन आफ्टर योर इंटरवेंशन, क्योंकि इंटरवेंशन के बाद भी जो ट्रायल्स हैं कुछ उस वो कहते हैं कि आपने कर भी दी इंटरवेंशन तो आपने कॉम्प्रेशन थेरेपी देनी है. ओके, सो व्हाट आर इंटरवेंशंस अवेलेबल एंड व्हाट आर देयर कॉम्प्लिकेशन? आप फर्स्ट लेते हैं. इंटरवेंशंस क्या होते हैं? किसी पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया, वेरिकोसिटिस थी, वेनस अल्सर था, और इसका हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसको रिफ्लक्स था ग्रेट सेफनेस वेन का, और कुछ लोअर एक्सट्रीमिटी पे लेग पे भी 1-2 परफोरेटर्स थे. सेफनेस ट्रंक का और GSV पे रिफ्लक्स था.
इंटरवेंशन कौन कौन सी ब्रॉडली? मेरे पास एक स्लाइड है नेक्स्ट, मगर इंटरवेंशन में मैडम ब्रॉडली हमने उस पे जाना है, जो ट्रंकल रिफ्लक्स है सबसे पहले हमने उसको ट्रीट करना है, और हाँ क्या है? परफोरेटर रिफ्लक्स को छोड़ना है मैडम। तो इंटरवेंशंस क्या हैं? तो मैडम हमारे पास है कि साइज पे डिपेंड करता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट saphenous vein फ्रॉम द स्किन। तो अगर साइज इज मोर देन 6 mm है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्किन इज मोर देन 5 millimeter, then we and the vein is not great tortuous, then we can go for endovenous thermal ablation procedures. And if the size is less than 6 mm, and or this distance is less than equal to or less than 5 mm from the skin of the great saphenous vein, then we will opt for either open surgery or the foam sclerotherapy. ओके, सो ये ब्रॉड एक आपका जो है ना वो गाइडलाइंस है, ठीक है। ये एक एंडोवीनस थर्मल एब्लेशंस है। एंडोवीनस और क्या ऑप्शंस है नॉन थर्मल एब्लेशन के? Boca. Non-thermal ablation is, madam, one is cyanoacrylate adhesive closure, and the second is ultrasound guided foam sclerotherapy. Third is catheter directed foam sclerotherapy, and the one is, madam, mechanical ablation, in which there is mechanical ablation of the antenna and along with the sclerosant injection. चलो ठीक है, तो मतलब अच्छा है, कुछ लोग पढ़ के भी आए, गुड। ओके, सो हाउ डू यू ट्रीट द स्मॉल वेन दैट लुक्स अगली? telangiectasis और reticular vein? Madam, ultrasound guided foam sclerotherapy. Foam sclerotherapy. अच्छा, वेन्स वापस आती हैं अगर आप जो है ना एक दफा पूरा अच्छा सा ऑपरेशन कर दें तो? आएंगी क्या? आपने Uh, आज मेरा ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि आप अब मेरा ऑपरेशन नेक्स्ट वीक कर देंगे, तो ये वापस आ जाएंगे क्या मुझे कभी? Yes, there is Yes, a madam. There is recanalization, and there is also new vascularization, and there is the appearance of reflux in the previously normal veins can also occur. तो डॉक्टर जी, इनको मेजर जो है ना चीजें तो सारे एक दो जो लोगों ने मुझे बता दिए हैं। नाउ यू हैव टू टेल जो चीज अगर मिस हो जाए। सो नाउ कम्स माय फ्यू प्रेजेंटेशन आइटम। सो नॉन ऑपरेटिव में ऑप्शंस में ऑफ कोर्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की वैरायटी हैं, और बेस्ड ऑन कंप्लायंस दे हैव कम अप विद मेनी ऑप्शंस ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, स्टार्टिंग विद 18 to 20, जो कि कभी कभार कंप्रेशन प्रोफाइलेक्टिक भी देते हैं डीवीटी, मगर अर्ली ग्रेड C1 C2 के लिए वो भी दे सकते हैं। फिर दोज हु कैन नॉट कंप्लाई विद द कंटिन्यूस कंप्रेशन स्टॉकिंग, उनके लिए इंटरमीडिएट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस भी दी जाती है। फिर पेशेंट विद सस्पेक्टेड, दिस इज एन एल्गोरिदम जिसमें डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड आपने किया, अगर CVD है उसको क्रोनिक वीनस डिजीज अनलाइकली, तो डेफिनेटली यू हैव टू, ये यूरोपियन वेनिस डिजीज से ही मैंने लिया है, ठीक है। अगर वो कैंडिडेट नहीं है फॉर इंटरवेंशन का तो फिर आप कंजर्वेटिव देते, मगर अगर सुपरफिशियल वीनस इनकॉम्पिटेंस है तो फिर आप उसको इंटरवेंशन करेंगे। ये डीप वीनस को मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि इस पे वरियाम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर सुपरफिशियल के ग्रेट सेफनेस वेन ट्रंक है तो यू डेफिनेटली, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ऑल्दो देयर आर सम एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, बट यू talk to patients about all these things which I have just talked to you, जो पेशेंट काउंसलिंग के मैंने क्वेश्चंस किए। और इसमें आपके अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं? हर एक के पास थर्मल एब्लेशंस नहीं है। फिर आप हाई लाइगेशन की भी बात करते हैं, कैथेटर डायरेक्टेड डिफरेंट, जो अभी मैंने बात की मोका की, नॉन थर्मल एब्लेशन के ऑप्शंस हैं, उस पर भी हमने बात की। तो वो सारे ऑप्शंस की जो आपके पास अवेलेबल हैं, अभी भी बहुत सारी जगहों पे हाई लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अब डिफरेंट दूसरा ऑप्शन ये है कि इन प्लेसेस वेयर देयर इज perforators in the leg and great saphenous reflex, whether you will do the concomitant like same time both surgeries, or you will stage them. It depends on whether you are doing the patient procedure under general anesthesia or you're doing the endovenous ablation. Then if it is an endovenous ablation, you can do the great the saphenous trunk first, and then if it resolved the
the varicosities into the leg, then you may not need to do the leg work post-operatively. But if it remains and there are some varicosities, you can plan to do this under local or monitored or whatever anesthesia required as a stage procedure. But if you are doing the procedure under general anesthesia, open or endo, then you can do the both procedure, great saphenous ablation and the phlebectomy of the leg vein at the same time, and this is universal. So अगर symptomatic small saphenous vein है, is again the same. आप इसका endovenous thermal ablation based on the the availability of resources. आपके पास है क्या? Causes of recurrence, सबसे बेस्ट ये है कि आपने इनिशियली प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करके देखा कि रिफ्लक्स क्या है और फिर आपने सही तरह कैनुलेशन की या नहीं. फिर ये आपका टेक्निकल एरर है. फिर टेक्निकल एरर है कि आपने एंडोविनस में सही तरह कैनुलेट करके किया, विजुअलाइज किया सेगमेंट को, डिलीवरी ऑफ एनर्जी ग्लू स्क्लेरोजेंट एजेंट सही किया. ओपन में अगर आपने इनकम्प्लीट स्ट्रिपिंग की तो भी आपका जो है रिकरेंस हो सकता है. ऑफ कोर्स you did the fantastic job. Even then there are some tortuous reflux vein which may come because of new vascularization. In the past, for this new vascularization, people have done closing the fascia at the place of the high ligation of the saphenofemoral junction, जहाँ पर आप मल्टीपल ब्रांचेस को लाइगेट करते हैं एट द SFJ, वहाँ पर वो फेशिया को क्लोज कर देते हैं ताकि वो न्यू वेस्कुलराइजेशन और न्यू रिकरेंस ना बनाए. तो दिस इज वन टेक्निक दे हैव ट्राइड in the past for the open procedure. Or in sometime there is a disease progression and accessories when that may develop. So take home, मैं अपने टाइम पे हूँ क्योंकि मेरा अच्छा खासा काम वरियाम ने कर दिया था. Individualized treatment as per history, clinical examination, patient frailty. Not everybody who comes with varicose vein needs and should be offered treatment because this is not often the emergency. And of course, how much of this varicose or chronic venous insufficiency affecting the quality of life. Some patients definitely require something needs to be done for their extensive varicose venous ulceration, which may get repeated infected and hospital admission. So it depends कि उनको क्या effect है on their quality of life. And also you have to offer treatment based on available modality and what is the venous pathology. And first thing first, do no harm. Not all veins you need to jump on and treat. Do proper evaluation and then offer the treatment. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Idam. That was a great talk, and very pertinent and to the point, and you have made it very interactive. Thank you for that.